Namaskar to one and all present there. Namaskar to one and all present there. Welcome back to our science channel, Science Vision by Anil Kamboj. In the previous lecture, we have discussed about the displacement and time graphs. In that, we have studied about the graph of rest and uniform motion. In rest, we have seen that firstly, while we are going to draw any graph, time should be the independent axis, displacement should be on that side, vertical side. So, if object is in a rest, then graph is always parallel to the time axis. That we have studied in the previous lecture, our first part of this class. And if object is in a uniform motion, then graph should be the straight line. And we have also calculated the slope of this graph, which is equal to the velocity. Its formula we have already done in the previous class. Now in today's lecture, we are going to discuss about the non-uniform motion. In non-uniform motion, we know that object covers unequal distance in equal interval of time. Firstly, we will draw its table, a rough table for that. Time, displacement. So rough table we will draw about this. Time, as earlier we are taking 0, 1, 2, 3, 4, 5. So each interval should be of 1 unit. Here you can check that each interval is of 1 unit, or you can say 1 second. 0 to 1 the difference is 1, 1 to 2 the difference is 1, 3 to 4 difference is 1, 2 to 3 difference is 1 second, and so on. 1 second. Now, what about the displacement? Initially, let us say displacement is 0. After that, displacement reach 3. After that, displacement reach 7. After that, let us say 11, 15, 20. So that is the displacement. Now we can check the interval of the displacement. Here it is 3 meter, 4 meter, 7 minus 3, 4 meter. It is also 4 meter. It is also 4 meter. It is 5 meter. So each interval is different. It is not equal. So we'll draw the graph for it. Let's firstly mark the values. This is our origin, time axis. Time axis starting from the 0 ending at the 5. So we divide it into 5 equal parts, 1, 2, 3, 4, 5. So we can say 1, 2, 3, 4, 5. Now in the same way, this axis started from the 0 and at the 20. So we'll take the margins of 5, 10, 15, and this should be 20. Now first point is 0, 0. It should be at the origin. Second point 1, 3. 1 is from that side. 3 will be something to be there. If you will draw on the graph, you will get the exact value. Second, 2 and 7. 2 will be there and 7 will be something there. So second point we will get this point. 3, 11. 3 and it should be the 11. 4, 15. Next point should be this one. 5, 20.
So it should be this one. Now when all these points should be combined, you will see that graph is not the straight line. Graph is little bit curved. So this is the example of non-uniform motion. When the motion is non-uniform, graph will not be the straight line. It should be curved. Any curve. Here I can show you more graphs of non-uniform motion. If this is time axis, this is position axis. Graph may be like that, or graph may be like that, or graph may be like that. Means graph is not straight line. Where in case of uniform motion, graph is straight line. But in case of non-uniform motion, graph is not straight line. It is curved line. And slope of curve is different at different point. You can check here the slope is something else. Here the slope is something else. We'll take that point. We can find out the slope. What is the formula of slope? Slope is equal to y2 minus y1 divided by correspondingly x-axis point. So if I will take the slope of this point, y, it is the 7. y2, we have to take y2. This is the y2. 11 minus this one 7 correspondingly 3 minus 2. So slope of only that portion is 4 by 1, that is 4. The slope is 4, means velocity at that point is 4. Now if you will try to find out the slope of this point, it will be something else. Firstly take the y2 and y1. y2 should be 20, that y2 should be 20 divided by correspondingly x2 5 minus y1 इसको अपन ले लेते हैं, that is 15 x 15 वाले के correspondingly आएगा 4. So its answer will be 5 by 5 by 1, that is equal to 5. So at that point slope is 5, at that point slope is 4. When two different slopes are found in the same graph, then we will say that motion is non-uniform. So this is the example of non-uniform motion. So with the help of graph, we must have the knowledge of slope of the graph. From the slope of the graph, we can calculate any unknown quantity. Like displacement time graph, the slope of this graph always give us velocity. क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर वर्टिकल एक्सिस, नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया था हमने, इस साइड पे displacement. On that side we have taken the displacement, so we can say displacement upon time, because in the horizontal line it is time and it is the formula of velocity. So we can find out the velocity by this method. So this is the graph for slope as well as non-uniform motion. Next, we are going to do our next topic, that is velocity time graph. Velocity time graph. So again, first case is the uniform velocity. When object is moving with uniform velocity, what does it mean? That means change in the velocity is constant. Change in the velocity is constant, or we can say the change in the interval of velocity is equal at every interval of time. You can say change in the interval of velocity is same, or we can same along with the is same in every interval is same in every interval of time. यही थी हमने यूनिफॉर्म मोशन
मैं जब भी स्टडी किया था दैट चेंज इन द वेलोसिटी इज सेम इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ सॉरी टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। टाइम, अब वेलोसिटी आ जाएगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे। अगेन सेम एग्जांपल विल टेक, टाइम इज 0 1 2 3 4 and 5, interval of time is same, velocity let us say initially it is 0, after that 10 20 30 40 50, it is meter per second, velocity in meter per second. So what is the first interval? Here the time interval is 1 second, whereas velocity interval is 10 second. So here you can see that it is same in each interval of time. So velocity is uniform. That definition we have already done. Let's see its graph. जल्दी से बता दो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी रहने वाली है, वर्टिकल एक्सिस कौन सी रहने वाली है? हाँ जी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम एक्सिस, वेरी गुड। वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने किया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, सो वेलोसिटी इज ए dependent variable. If it is a dependent variable, then it will lie along the y axis. Velocity should be along the y axis. Its units that we are taking meter per second, its unit we are taking in seconds. Again we will draw the graph 0 to 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5. Here 0 to 50, so we will take each interval of 10 units, 10 20 30 40 and 50. Now mark the point, first point 0 0, second 1 and 10, 1 10, so it will be the second point, 2 20, it will be third point, 3 30, it should be the next point, 4 40, 4 corresponding 40 है, 5 के corresponding 50 है. So what we have seen there, when we match these points, a straight line graph is observed, and this is the identification of the uniform motion, that when motion is uniform, whether it is a velocity, whether a simple displacement, whether simple acceleration, graph will be always straight line. So this is the example of the uniform motion or uniform velocity, you can say. Now if I will erase that dotted line, it should be look like something that, because dotted lines are the imaginary line, already we have discussed in the previous lecture. So our graph should be like that. If that table is not given to us, simple question is given to us in the exam, that draw the velocity time graph, what we will do? We will not mention that values, we will simply draw the graph without mentioning any value. Same on that side, because values are not given. So this is the simple graph for the uniform velocity. Now if we have to find out the slope, let us say values were given 1 2 3 4 5, that graph is given to us 10 20 30 40 50. You have to calculate the slope of this graph. The formula of slope is, जल्दी से बता दो, y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is slope. ध्यान से देखो, y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी. x एक्सिस पे क्या है? टाइम. Now change in velocity, the sign negative shows change in the velocity. So change in velocity, we can say, we can write it like that, change in velocity divided by time interval. ये टाइम इंटरवल होता है x2 minus x1. If I am taking this interval, so this is a time interval x2 minus x1. Even if I am taking x2 minus x1,
this will be time interval. So we can say time interval or total time taken. We can say time interval और total time taken. इसका फॉर्मूला होता है ये change in velocity per unit time. It is the formula of acceleration. So what does we will get from the slope of this graph? We will get the acceleration. Let's calculate its acceleration. I am taking these 2 points. 40 correspondingly 4, 10 correspondingly 1. So I am taking these 2 points. Now this is the velocity, final velocity we can say y2 whose value is 40, y1 10, correspondingly x2 पहले x2 आएगा that is 4, x1 1, so 30/3. Our answer is 10 meter per second square, that is the unit of acceleration. So throughout all the points, whenever you will take any 2 points, its velocity will be 10 acceleration will be 10 meter per second square. कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए. If you will take that point and the first point, again answer will be same. यूनिफॉर्म मोशन की यही खासियत है कि उसकी स्लोप सेम रहने वाली है. कोई भी अभी अपन ये 2 पॉइंट लेते हैं 50 minus 10, 50 के कोरस्पोंडिंगली पॉइंट आएगा 5 minus 1, आंसर क्या आ जाएगा 40/4. अगेन आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमने ये 2 पॉइंट लेके भी करके देख लिया तो भी आंसर कितना आएगा 10. 50 और ये पॉइंट लेके देख लो 50 minus 0, 50 minus 0, y2 minus y1 कोरस्पोंडिंगली 50 के कोरस्पोंडिंगली है 5, 0 के कोरस्पोंडिंगली 0 ही था तो क्या आ जाएगा 50/5. अगेन आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम acceleration is same. It shows that is the graph of uniform velocity. Now one more interesting thing, we will get the slope of this graph. Along with the slope we can also calculate the distance moved by the object. अब देखो कुछ ना कुछ velocity के साथ चल रहा है and that velocity is 10 meter per second. तो चल रही है कोई चीज, मूव हो रही है तो obviously उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुई होगी. अगर कोई भी बाइक है या कोई भी इंसान है, if that इंसान is going, that person is going from point A to point B, तो उसकी कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी. A पॉइंट से B पॉइंट जाने तक उसको 5 सेकंड्स लगे, टाइम लगा उसको 5 सेकंड. 0 से स्टार्ट हुआ 5 सेकंड, जब यहाँ पे था तो A पोजीशन पे था, यहाँ पे आ गया सो इट इज इन द B पोजीशन, बी पॉइंट पे आ गया यहाँ पे आते आते. तो यहां से यहां तक उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मींस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, टाइम लगा उसको 5 सेकंड. एक्सेलरेशन है उसके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन सेम चेंज हो रही है, इंटरवल ऑफ वेलोसिटी सेम. नाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन दैट ग्राफ दैट वी कैन कैलकुलेट displacement with the help of graph. We can find out displacement of object through velocity time graph. How we can find out? Let's see there that how we can find out that displacement. So this is our graph. Whatsoever be the area under the graph will give us the displacement. That is equal to the area under the graph. It will give us the value of the displacement of the object moved. हम वेरीफाई करते हैं इसी चीज को. If we'll say which area is occupied by that graph, इस ग्राफ के नीचे नीचे कौन सा एरिया आ रहा है, दिस वन दिस वन दिस वन. जो भी मैं ये शेडेड कर रहा हूँ ये सारा एरिया इसी ग्राफ की हद में कह सकते हैं आ रहा है. हमें 5 तक ही जाना था सिर्फ. सो यहाँ तक का ये जितना भी एरिया शेडेड है क्या ये सारा का सारा इसी
ग्राफ के अंडर आ रहा है, what we have written there, area under the graph. Let's give some name. This is point O, this is P, this is any point Q whose value is 5 as we have taken. So what should be the area under that graph? That is equal to the area of triangle, OPQ. So it is a triangle OPQ. O वापस कहाँ पे आ गई? जहां से स्टार्ट हुए थे, स्टार्ट कहाँ से हुए? O से स्टार्ट हुए, P तक गए, P से Q तक, Q से O तक। तो देखो इसके अंदर यही एरिया आ रहा है, area under the graph, that is equal to area of triangle OPQO. What is the formula of area of triangle? Half multiplied by base multiplied by height, that is the formula of the area of the triangle. तो निकाल लेते हैं हम अभी यहाँ से। बेस कितना है? 0 से लेके 5 तक, मींस 5 यूनिट्स। अगर इसी एग्जांपल के थ्रू करके देखें तो बेस कितना है? 5 यूनिट्स, या फिर आप कह सकते हो 5 सेकेंड्स। हाइट कितनी है? दैट इज द हाइट, केयरफुली देखना, दैट इज द हाइट। अगर मैं इसके पैरेलल चलता हूं, कैन वी से दैट ये 50 पॉइंट तक लिया है, दिस इज द हाइट, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है। सो 50 मीटर पर सेकंड, हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वाली मैक्सिमम कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। ये हाइट बिल्कुल यहां से उठाई है हमने, सो दैट विल बी 50 मीटर पर सेकंड। यहां से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि एरिया ही क्यों डिस्प्लेसमेंट देता है हमें। हम यूनिट से वेरीफाई करेंगे। चलो 2 से 50 को कट कर दो, दैट विल बी 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 125। अब यूनिट्स में एज इट इज लिख रहा हूं, यहां पे सेकंड पड़े हैं, मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, व्हाट शुड बी आवर आंसर? 125 मीटर। बेटा इसके यूनिट से वेरीफाई हुआ था, जब भी हम इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो इसके यूनिट से वेरीफाई हो गया था, दैट इज द यूनिट ऑफ अ लेंथ मींस डिस्प्लेसमेंट, because displacement is the straight path from one point to the another point. So इसके यूनिट्स ने कंफर्म कर दिया था कि जब भी किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमेशा के लिए याद रख लो, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाए, if velocity time graph will be there, you have to find out displacement. What you will find out? You just find out area under the graph, that's it, area under the graph। ये फाइंड आउट कर लेना, आपको आपकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो हम ये वाली स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इस ग्राफ में कितनी सारी इंफॉर्मेशन हिडन है, कहां पे हमें इतना बड़ा टेबल बनाना पड़ रहा था, कहां पे अगर एक ये ग्राफ गिवन है, we can calculate acceleration as the slope of this graph and area as the displacement that is lying under the graph, area under the graph। तो ये तो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। एक और करते हैं, इसमें हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही थी। अब कंडीशन ये है, लाइक जैसे हम बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो वेलोसिटी चेंज नहीं करते, वेलोसिटी फिक्स है। फिक्स वेलोसिटी के साथ अगर मूव करेंगे तो उस टाइम पे हमारा ग्राफ कैसा रहने वाला है? इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है, फिक्स रह रही है वेलोसिटी, तो उस टाइम पे कैसा ग्राफ आने वाला है उसको देखते हैं। तो यही एग्जांपल लेके चलते हैं। इस पर्सन ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ही हैज टू रीच हिज डेस्टिनेशन अप टू द पॉइंट बी। यहां से जब चला उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड। वो अपनी बाइक के ऑडोमीटर में देखता जा रहा है कि वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है। कुछ टाइम के बाद यहां पे चेक की, वहां पे भी कितनी थी? 30 मीटर पर सेकंड। लेट अस से 0 टाइम पे चेक की उसने, मींस जब देखा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 30 मीटर पर सेकंड। कुछ टाइम के बाद 5 सेकंड्स के बाद देखा, तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड्स के बाद देखा, तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर
सेकेंड। इन द सेम वे 15 सेकेंड के बाद वो देखता है तब भी उसको मिलती है 30 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकेंड पास आउट हो जाने के बाद भी जब वो चेक करता है तब भी रहती है 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से है थ्रू आउट द टाइम। तो चेक करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा रहने वाला है। अगेन विल ड्रॉ द ग्राफ। ये ग्राफ सीख लेना, अगर ये ग्राफ यहां तक समझ आ गए इट मींस आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड। टाइम, अगेन वेलोसिटी। अब ये तो बेटा माइंड में बिठा लो, बात ब्रेन में बिठा के रख लो कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट विल बी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब टाइम 0 है तो अपन यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। टाइम 0 से लेके 20 तक जा रहा है तो 0, 5, 10, 15, 20. In the same way, vertical markings 10, 20, 30, 40, 50. Now condition we have already analyzed that when initially we have seen, मान लो मैंने अभी आपकी तरफ देखा, इस टाइम आप किस वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे हो 30 के साथ। तो जैसे टाइम 0 सेकंड था मुझे जो वेलोसिटी मिली दैट इज 30 सेकंड। मैं फिर आप लोगों को देख रहा हूँ इस टाइम भी आप किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो 30 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद जब देखा तब भी आपकी वेलोसिटी 30। थोड़ा टाइम और पास आउट हो गया और फिर दोबारा आप लोगों को देखा इस टाइम, फिर आपकी वेलोसिटी कितनी है 30 है। 15 सेकंड पास आउट हो गए भी आप दूसरी वेलोसिटी के साथ ही मूव करते जा रहे हो। सो व्हेन all these points are matched, what it is found? It is found that the graph is parallel to time axis. It means it is moving with the constant velocity. The object is moving with the constant velocity. अगर मैं नीचे वाली डॉटेड लाइन एक बार इरेज कर दूं क्योंकि ये हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई थी। Now what we have found that object is moving with the constant velocity. अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो इसमें हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। अब इसकी स्लोप, क्या इस ग्राफ की कोई स्लोप है? क्या कोई ढलान दिख रही है इसमें? नहीं। अगर ढलान नहीं दिख रही तो स्लोप क्या होगी 0। अब स्लोप की वैल्यू क्या होती है y एक्सिस कंपोनेंट चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस मींस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन ये टोटल टाइम। हम नीचे सिंपली राइट कर लेते थे टोटल टाइम। अब वेलोसिटी में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, पहले भी 30 की वेलोसिटी थी, बाद में भी कितनी है 30 की है। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया 30 माइनस 30। टाइम जितना भी है लेट अस से टाइम 0 एंड 20 माइनस 0 तो 30 माइनस 30 क्या हो गया 0। 0 डिवाइड बाय समथिंग दैट इज ऑलवेज 0। तो इस चीज की इट मींस इट्स एक्सेलरेशन इज 0। और हमें पता है जब भी कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है 0। इससे पहले हमने एक ग्राफ किया था दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इफ इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस means there is no change in the displacement, its displacement is constant। in that case same velocity is constant। अगर velocity constant होगी तो हमारा acceleration का फॉर्मूला होता था v minus u by t। अब v कितना है v मान लो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल ये वाली मैं मान लेता हूँ दैट इज द फाइनल वेलोसिटी v। ये u मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी u, जो स्टार्टिंग वाले टाइम पे है वो u है, जो बाद वाले टाइम पे लास्ट वाले टाइम पे आ रहा है दैट इज v। तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 30। टाइम तो चलो ये इतना टोटल टाइम कितना लगा 0 से लेके 20 तक जाते जाते 20 सेकंड। आंसर क्या आ गया 0। सो सच टाइप ऑफ ग्राफ विल शो द कांस्टेंट वेलोसिटी और यू कैन से जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ। तो कई बार भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले ड्रॉ द ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन, यू हैव टू ड्रॉ इट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। पर इस केस में व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट? Now you have to tell me that what should be the displacement in that case। क्या फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट का
In velocity times graph, how we calculate displacement? Area under the graph. तो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ देखते हैं हमारे पास क्या है. लेट अस से दिस इज ओ ए बी सी. तो मैं देखो इस ग्राफ के अंदर कौन सा एरिया आ रहा है. जो भी मैं ये लेंस लगा रहा हूँ इसी ग्राफ के अंदर आ रही है सारी की सारी. तो लास्ट लाइन आएगी हमारी ये वाली. अब मैं इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ दिस ग्राफ. ये किसकी शेप बन रही है? ये बाउंड्री वाली किस चीज की शेप बन रही है? इज इट अ स्फीयर? इज इट अ स्फीयर? नो. इज इट ए पैरेललोग्राम? Yes, we can say. So area under the graph, that is basically area of that parallelogram, that will be equal to the length into breadth. Simply length into breadth, because हमें तो एरिया देखना है. पहले हमें शेप को देख लेनी है, शेप कौन सी बन रही है, उस शेप का एरिया. हम इस चीज को लेंथ मान लेते हैं, इस चीज को हम ब्रेथ मान लेते हैं. तो लेंथ तो हमारी थी 0 से लेके 20 सेकेंड्स. मैं अलोंग विद द यूनिट राइट करूंगा 20 सेकेंड्स. ब्रेथ कितनी है? दिस वन पोर्शन व्हिच इज इक्वल टू दिस वन पोर्शन व्हिच इज इक्वल टू 30. सॉरी, तो ये क्या बन गया? 30 मीटर पर सेकेंड. 2 into 3 600. यूनिट्स वैसे ही लेके चलता हूं मैं, सेकेंड मीटर पर सेकेंड. सेकेंड के साथ सेकेंड कैंसल आउट, क्या रहेगा हमारे पास? 600 मीटर. मीन्स इस पर्सन ने 20 सेकेंड्स में कितने डिस्प्लेसमेंट की फ्रॉम पॉइंट ए टू बी? दैट इज 600 मीटर. अगेन यहाँ पे देखो यूनिट से वेरीफाई हो गया. ये यूनिट किसके हैं? एक लेंथ के हैं. एक लेंथ मीन्स डिस्प्लेसमेंट, द स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ तक देख लो. किसी को अगर कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो. Now we'll say that when object have initially some velocity, means object initial velocity is not equal to 0, it have some value. For example, as we have previously seen that along the time and velocity table, we have seen that time is 0, but now sorry, velocity instead of 0, let us say it is 10. ऑब्जेक्ट के पास पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी. नो, टाइम पासेस ऑन. 1 सेकंड इट्स 15, 2 सेकंड 20, 3 सेकंड 25, 4 सेकंड 30, 5 सेकंड 35, 6 सेकंड 40. हमने एक यूनिफॉर्म मोशन ही लिया, बट इसमें चेंज क्या है? इस बार वेलोसिटी इनिशियली 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है उस वेलोसिटी की. तो इसके लिए जल्दी से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, then we'll discuss about this thing. Time in seconds, starting from the 0 and at the 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट वेलोसिटी देखो, 0 पे वेलोसिटी कितनी है? चलो पहले मार्किंग ड्रॉ कर लें. 10 to 40, 5 5 की कर लें. 5 10 15 20 25 30 35 and that will be 40. अब ध्यान से देखो, 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10. ये पॉइंट आ गया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं. 1 पे वेलोसिटी कितनी हो रही है? 15. 1 पे 15 हो रही है. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस इमेजिनरी लाइन. 2 पे जाते जाते वेलोसिटी कितनी हो रही है? 2 पे जाते जाते जल्दी देखो, 20.
2 पे जाते जाते उसकी वेलोसिटी होगी 20, 3 पे जाते जाते हो रही है 25, 4 पे जाते जाते हो रही है 30, इट शुड बी नियरली दिस पॉइंट, 5 पे जाते जाते हो रही है 35, 35 वाली लाइन आप थोड़ी ड्रॉ कर लेते हैं, दूर हो गया, इट शुड बी दैट पॉइंट। नेक्स्ट हो रही है 6 पे जाते जाते 40, it should be this point. So if I will erase that imaginary lines, now see which type of graph this will be. Whenever you will match these points, the graph should be something like that. तो ये पॉइंट था यहाँ पे हमारा 15, यहाँ पे हमारा पॉइंट था 20, 25. So graph should be something like that. Now graph is not started from the origin, it is started from some value, and that some value is called initial velocity u. इसके ऊपर वाली सारी फाइनल वेलोसिटी होंगी, इसको भी v कह सकता हूँ, इसको भी, ये सारी की सारी बाकी v कह सकता हूँ मैं, बट जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। इसको अपन नाम देते हैं फिर से, लेट अस से दिस इज o, a, b, c एंड अगेन o पे आ जाएंगे वापस हम। सो व्हाट शुड बी द एरिया अंडर दैट ग्राफ? अब ध्यान से देखना इसके अंडर का एरिया, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड एक बार लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट विल बी एरिया अंडर दैट ग्राफ। अब बेटा ये ट्रायंगल तो बन नहीं रही, 6 शुड बी देयर। अब ये ट्रायंगल तो बन नहीं रही है बेटा, क्योंकि ट्रायंगल अगर देखूं यहां तक तो ट्रायंगल है, इसके ऊपर ऊपर तो ट्रायंगल है, लेट अस से दैट P पॉइंट, सो कैन आई से दैट A B P इज ए ट्रायंगल, एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग जिसमें मैं डबल क्रॉसिंग कर रहा हूं, व्हिच शेप इज दिस वन? दिस इज ए रेक्टेंगल। अब इसमें एरिया कैसे निकालोगे? इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट अंडर दिस ग्राफ, सो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? जल्दी कौन सबसे पहले आंसर करेगा? जल्दी से निकालो अपने अपने डिस्प्लेसमेंट, कितनी है डिस्प्लेसमेंट? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ग्राफ that is equal to area under, कौन सी लाइन के अंडर एरिया है? O A B, O A B P, P लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम चलते हैं, C एंड वापिस O, so that will be area under the graph O A B C O। अब मुझे इसमें दो डायग्राम्स दिख रही हैं, वन इज द ट्रायंगल, one is that rectangle, so can I break it into the two parts? That is equal to area of ABP, area of triangle ABP, ABP वापिस ला के यहाँ पे बंद भी करना होता है A, क्योंकि ट्रायंगल पूरी तभी बनेगी ना जब उसको लाके बंद करेंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कौन सी बन रही है? यहीं से स्टार्ट करो, यहाँ पे छोड़ा था, ये यहाँ पे लाए, चलो O C ऐसे करते हैं, O A P C O, दोबारा देखो O A P C O, so that will be area of rectangle, क्या नाम है रेक्टेंगल का? O A P, O A P C O, C तक गया और लास्ट बंद कर दिया उसको O पे लाके। अब दो अलग अलग फॉर्मूलास यूज होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस इज AP मल्टीप्लाई बाय दैट हाइट, दैट इज BB, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ विल बी OC, length will be OC
its breadth will be, only that portion will be its breadth, that will be its length. So that is PC या CP, कुछ भी आप राइट कर सकते हो, PC. So that will be the area in that case. तो जब भी ऐसा कुछ complicated case आ जाए, simply you will divide the diagram into two different shapes, then you can easily find out the area. So put the value, will get it half. A से लेके P तक वैल्यू कितनी है, जितनी ये होगी, that is equal to OC. Can I say that AP is equal to OC? AP is equal to OC, whose value is 6. बेटा ये मैं साथ में न्यूमेरिकल भी आपको करके दिखा रहा हूँ, so that आपको अलग से टाइम ना देना पड़े न्यूमेरिकल को. नेक्स्ट B से P, B से लेके P तक, that one. ऊपर वाला तो 40 तक था, P वाला कहाँ तक जा रहा है, 10 तक. 40 माइनस 10 कितने यूनिट्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30. ये कितने यूनिट्स हो गए, 30. आप यूनिट भी मेंशन कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूनिट नहीं मेंशन कर रहा हूँ इस बार. मल्टीप्लाई बाय OC, OC ऑलरेडी हम देख चुके हैं 6 तक है, मल्टीप्लाई बाय PC, PC कितना है, 10 है. अब निकालो एरिया, ये कट करके 3 आ गया, दैट इज 90 प्लस 60, दैट इज इक्वल टू 150 मीटर. तो इस तरह से आप अलग अलग ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं. स्लोप निकालो इसकी. स्लोप निकालने का क्या मेथड था, एनी टू पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, लेट अस से वन इज दैट पॉइंट, इसके कोरस्पॉन्डिंगली 5 है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली 5 है. सेकंड हम ये पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंगली 3 है. तो ये दो पॉइंट लिए हैं मैंने, तो इनको नाम दे दो P Q, चलो नाम रहने देते हैं, एक बार डायरेक्टली वैल्यू फिल करते हैं. y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. y2 कितना है, 35 माइनस y1 कितना है, 25. कोरस्पॉन्डिंगली x2 कितना है, 5, x1 कितना है, 3. ये आ जाएगा 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये उसकी एक्सेलरेशन आ गई. बेटा अगर ढलान है उसका मतलब स्लोप है, स्लोप है तो एक्सेलरेशन भी होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. पिछले वाले ग्राफ में स्लोप नहीं थी, वो ढलान सी नहीं थी. ग्राफ कुछ इस तरह का था, ढलान नहीं है तो स्लोप नहीं है, एक्सेलरेशन इज द 0. लास्ट केस है रिटार्डेशन वाला, वो भी यहाँ पे देख लो साथ के साथ ही. टाइम में वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी कम होती जा रही है, ग्राफ कुछ इस तरह का बना, इस पॉइंट पे मतलब 0 टाइम पे तो जब मैंने देखा वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, उसके बाद व्हीकल को ब्रेक अप्लाई करते गए तो वेलोसिटी कम होती गई, वेलोसिटी कम होती गई. 1 सेकंड पे वेलोसिटी कम होगी और कम होगी और कम होगी. इस पॉइंट पे जाते जाते वेलोसिटी 0 ही होगी, तो ये बनेगा रिटार्डेशन का. तो इस केस में हमें रिटार्डेशन मिलने वाली है. उसकी जो स्लोप आएगी, स्लोप का आंसर नेगेटिव आने वाला है. इफ स्लोप विल बी नेगेटिव, देन इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द रिटार्डेशन. ये क्वेश्चन है आपके लिए एज ए होमवर्क, तो इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट में आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द आंसर. अगर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, ट्राई टू डू दैट first answer on the graph book. You will get the accurate analysis of this table on the graph book. If you have the graph book, तो उस पे आप इस ग्राफ को एक बार ड्रॉ करके देखना, then you will get the accurate answer. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो इसी लेक्चर पे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट छोड़ सकते हैं. थैंक यू.